हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइजेज वाला पार्ट, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसका हम एक्सरसाइजेज वाला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। तो 8 क्वेश्चन है इसका। इन व्हाट वे वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। तो हमें बताना है कि जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कंपनी का जो प्रशासन था, वो इंडियन रूलर से किस तरह अलग था। इसका आंसर हम लिख लें सीधे। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज लाइक बंगाल, Madras and Bombay, whereas under the Indian rulers administration was divided into 4 parts: district, जिला, परगना, तहसील एंड विलेजेस। तो भारतीय जो शासक थे वो जिला बनाते थे, परगना, तहसील और ग्राम। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा 3 प्रेसिडेंसी में: बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। Each administrative unit was ruled by the governor. ये था इनका। The supreme head of administration was Governor General, whereas under the Indian administrative system, the supreme head was King or Nawab. Warren Henston introduced the new system of justice. Each district was to have 2 codes, civil and criminal code. The European district collector presided over civil codes. The criminal codes were still under a Qazi and a Mufti. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established. The main figure in an Indian district was collector. According to his title, collector, his main job was to collect the revenue and the taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. तो ये जो दरोगा शब्द आया है वो ब्रिटिश काल से ही आया है। Describe the change that occurred in the composition of company's army. During the 18th आंसर करना है। During the 18th century, when the East India Company began recruitment for its own army, it started recruiting peasants and began training them as professional soldiers. Like the Mughal army, the company's army was also composed by cavalry and infantry regiments, with the cavalry dominating the army. However, as warfare technology changed during 19th century, the cavalry requirements of the company army declined, as the soldier had to be armed with muskets and matchlocks. The infantry regiment became more important. तो इस तरह से ये पार्ट
कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर है और इसको हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।